Hey everyone, welcome back to my channel. So in this video, we will learn about then method and catch method. So then method, then method and catch method, catch methods. So what is then method and when to use this then method? So before using then method, we create our promise. And in previous video, we learned how to create promise. So using new promise constructor, and this new promise constructor returns an promise object and takes two callbacks. First is resolve and second is reject. And this is our promise. And first we want to first we um, call an API. So API call is equals to true. If API call is true, then it means promise is notify, it will solve. API call is successfully completed. If API call is failed, we call reject callback function which passes error rejected. So this is our promise object, and just print the promise and run this code. So promise is successfully resolved, and print this message which is promise state is fulfilled, and their result is API call is successfully completed. So dot then method is used when we want to do something after our promise is resolved. So here is our promise is resolved, and we want to call another API. So just print this. We are call another API and run this code. So here it is our results. First promise object is fulfilled, and when the promise object notify it is fulfilled, then we execute our then method. But if promise object notify it is rejected, then this dot then method not be execute. So run this code. So there is an error. Okay, and dot then method is not execute because our promise is rejected, and this reject callback throw an error which is rejected. And so if you catch this error, then you can use catch method and pass error, simply print this error, and again we run this code.
So here our promise is rejected and we console our promise. So 8 नंबर जो हमारा लाइन ऑफ कोड है जिसकी हेल्प से हमने एरर को थ्रो किया है और ये हमारा प्रॉमिस ऑब्जेक्ट आया है। सेकंड हमने यहाँ पर एरर को वही एरर को प्रिंट कराया है, तो एरर हमारा क्या आ रहा था, ये आ रहा था पूरा, और इसी को हमने यहाँ पर प्रिंट करा दिया है। तो ये हमारा ये हमारा एरर प्रिंट हो गया। अगर हम यहाँ पर न्यू एरर को हटा दें, रिमूव कर दें, सिर्फ एक स्ट्रिंग वैल्यू पास कर दें, तो सिर्फ हमारा क्या आएगा, रिजेक्टेड आएगा। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पर ये रिजेक्ट कॉल बैक को कॉल करने से ये पता लग रहा है कि ये हमारा प्रॉमिस रिजेक्ट हो चुका है। तो ये रिजेक्टेड उसकी स्टेट है प्रॉमिस की, और ये उसकी वैल्यू है जो कि हमने इस स्ट्रिंग में पास की है। फिर जब हमारा प्रॉमिस रिजेक्ट हो जाएगा, यानी ये जो p हमने बनाया है वो रिजेक्ट हो गया, देन मेथड जो एग्जीक्यूट होगा नहीं। तो हमारा जब एरर आ रहा है, यानी कि रिजेक्ट कॉल हो रहा है और वो एरर थ्रो कर रहा है, रिजेक्ट कॉल हुआ यानी प्रॉमिस हमारा फेल हो गया, रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट जब हो जाएगा तो हमारा कैच मेथड एग्जीक्यूट होता है, और वो कैच मेथड इस वाली वैल्यू को एरर में ले लेता है। इस एरर को हमने कंसोल कराया तो हमारा यहाँ रिजेक्टेड प्रिंट हो गया। अगर हम यहाँ पर कुछ और भी वैल्यू पास करेंगे, लाइक प्रॉमिस, रिजेक्टेड प्रॉमिस, तो यहाँ पर अगेन हमारा एरर में क्या आएगा, रिजेक्टेड प्रॉमिस आएगा, और हमने उसको कंसोल कराया तो यहाँ कंसोल हो गया। तो ये होता है डॉट देन मेथड का यूज, कि जब हमारा प्रॉमिस फुलफिल हो तो हम देन मेथड का यूज करें, और जब हमारा प्रॉमिस रिजेक्ट हो जाए तो हम एरर थ्रो कराकर कैच मेथड का यूज कर कर और जो हमारा रिजेक्टेड एरर है उसको हम कैच करने की कोशिश करते हैं कैच मेथड के थ्रू। तो डॉट देन मेथड का काम कब होता है, जब हम चाहते हैं कि हमारा प्रॉमिस फुलफिल हो जाए और हमें दूसरी एपीआई कॉल करनी हो, हमें दूसरा फाइल लोड करना हो, हमें सर्वर से डेटा फेच करना हो, सर्वर से फोटो लेनी हो, तो हम डॉट देन मेथड का यूज करेंगे। तो जैसे हमारे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मल्टीपल ट्राई होता है और एक कैच ब्लॉक होता है, एरर को ट्राई हमारा क्या करता है, ट्राई जो ब्लॉक होता है वो हमारा जो है एरर हैंडल करता है। ट्राई कैच के हेल्प से हम एरर हैंडलिंग अपने किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करते हैं, वैसे ही डॉट देन और डॉट कैच मेथड से हम प्रॉमिस रिजॉल्व हो तो डॉट देन को हम एग्जीक्यूट करते हैं। अगर हमारा प्रॉमिस रिजेक्ट होता है तो हम डॉट कैच को एग्जीक्यूट करते हैं। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है डॉट देन की चेनिंग सीखेंगे, कि हमारे मल्टीपल डॉट देन मेथड होंगे और सिंगल कैच मेथड होगा। ओके।